Assalamualaikum, this is Mohammad Yasir Arafat, and in this video we are going to discuss Physics Paper 2 as per AKUEB syllabus for grade 9 and grade 10. So in this video we will be discussing all the questions associated with the knowledge-based question answers. As we all know that the paper 2 has two parts. Number 1 is CRQs, that is constructive response questions, and the other one is ERQs, that is extended response question. Constructive response question usually consists of short questions answers, and extended response question consists of long questions answers. As we know that the like MCQ, CRQ and ERQ paper also have background, stem or and main body. But in this part, instead of distractors, we are having the command words. So we need to focus on the command words to understand the requirement of the question. So command word usually clarifies the expectation in a particular question that is associated with a certain cognitive level, and that will also be assessed the students during the examination. So in the first part, we will be discussing the questions associated with the grade 9. Remember that we all are having three cognitive levels. Number one is knowledge, understanding, and application. So in this video, we will be focusing on the knowledge-based command words. First is define, that will allow you to define any certain process or any certain quantity or any certain method. You would require to list out, make a list of the given situation or the question. You will be mentioning some process that will be occurring in the question. State usually associated with the factual processes, the facts and figure. You need to state any principle or any other thing that will be the requirement of the main question. So there are some command words that usually can be used across all the cognitive levels. Those are the complete, explore, find, give, label, read, use, and write. So these 8 command words has not have any association with any certain cognitive level. So they can be used with all the cognitive levels depending on the numbers that is allocated to that particular question. So the first question is of 2 marks. Remember, whenever we are answering a question, we need to look at the allocated mark for that particular question so that it will help you to answer a question. So it says that write the name of physical quantity which is measured by a given instrument. So the instruments are given. One is measuring cylinder and number 2 is physical balance. The space is given. So remember, you need to write all the answers in the given space. You cannot go beyond the given space. So the first one is a measuring cylinder that will all measure the physical quantity volume. And the next one is the physical balance. So that will measure the mass of an object. So this is the question number 2 that is of 3 marks, but in part A they are asking the question for only 1 mark. So here the command word is state. There some is a few lines are given. So you need to state the situation or the reason behind the
question. So the question says that an animal fur coat is made in such a way that the inner surface of the material is animal skin and the outer surface is fur or hair. So state the reason why the coat is warmer. So we need to state the reason why the coat will be warmer if it worn inside out. That is, inner surface becomes the outer. So inner surface means the skin वाला section जो है that will remain outer side यानी जो कि बाहर की तरफ रहेगा and the fur वाला जो side है that will remain inside of the coat. So एक चीज याद रखो जब हम स्किन जो है स्किन वाला सेक्शन जब बाहर की तरफ रखते हैं सो दैट विल ब्लॉक द कोल्डर एयर दैट विल बी कमिंग आउटसाइड ऑफ द कोट और उससे जो ऑब्वियसली जो हीट ट्रांसमिशन के जो चांसेस है जिसमें हीट टेम्परेचर रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं ऑब्वियसली ड्यू टू द मोशन ऑफ द कोल्ड एयर सो वो आमतौर ब्लॉक हो जाएगा एंड ड्यू टू विच जो इनसाइड जो फर है फर जो इनसाइड बॉडी के इनसाइड जो हीट कोट के इनसाइड जो हीट डेवलप हो रहा है उसको फर्दर ट्रैवल से स्टॉप करेगा टू द आउटसाइड ऑफ द कोट सो इस वजह से आमतौर कोट तुम्हारे पास वार्म रहेगा सो यहाँ पे रीजन भी सेम वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कोट इज वार्मर इफ इट वॉर्न इनसाइड आउट वेयर इट ट्रैप्स द body heat and seals it inside. Also, it will not allow the cold air to move inside. Obviously, cold air अगर अंदर की तरफ दाखिल हो जाता है तो फिर it will reduce the temperature. So that means the coat will not remain warmer by that. So अब move करते हैं to questions. So the first question is mention any two benefits of transmitting information and data through optical fiber. अच्छा ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मेन कमांड वर्ड जो हमारा मेंशन है दैट इज एसोसिएटेड विद नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आल्सो अच्छा ऑप्टिकल फाइबर यूजुअली इट यूजेस द लाइट सिग्नल्स सो जब व्हेन इट इज यूजिंग द लाइट सिग्नल ऑब्वियसली लाइट यूजुअली ट्रेवल्स विद अ फास्टर रेट so it will not cause any damage to the data or in the information आमतौर पर इसके स्ट्रेंथ में वेरिएशन आती है तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है प्रॉब्लम किस सेंस में आ सकता है कि सिग्नल वेरी करेगा तो डेटा ट्रांसमिशन स्टॉप होने के चांसेस ज़्यादा है डिस्टॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं होता यहाँ पे अगर कहीं पर ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक हो जाए तो इट विल स्टॉप द इट विल नॉट अलाउ टू ट्रांसफर द डेटा बाय दैट टाइम ओनली बट यहाँ पे हमें बेनिफिट डिस्कस करना है तो मेन बेनिफिट के यह है कि डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड विद अ फास्टर रेट क्योंकि ये आमतौर पर लाइट सिग्नल में एनकोड हो जाता है तो सेकंड वन इज कि डेटा लॉस नहीं होता वाई क्यों डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सो व्हेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस it will not allow the energy to lose so energy lose यहाँ पर नहीं होगा energy will remain same क्योंकि जब कभी भी रिफ्लेक्शन टेक अकर होता है तो फिर वहाँ पर ना तो स्पीड ना तो वेवलेंथ ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगा so in the next question they are asking you to write one use of transformer so main command word यहाँ पे write है सो यहाँ पर अब करना ये होगा कि हमें मेन ट्रांसफार्मर का जो मेन यूज़ लिखना है सो रिमेंबर दैट द ट्रांसफार्मर यूजुअली यूज टू distribute or it will be used to transmit the electrical energy from one region to the another region so आंसर में लिखा गया है यहाँ पर ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस द एक्सटर्नल लोड सो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर यूज होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करेगा टू द एक्सटर्नल लोड कुड बी एनीथिंग राइट just like if the K electric is transmitting electrical energy to us they will be using the PMT is a kind of transformer राइट और उस ट्रांसफार्मर में एक पर्टिकुलर इलाके के या एक पर्टिकुलर रीजन के मल्टीपल हाउसेज उस सेम ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड रहते हैं सो इट विल मेक लाइफ मोर easier to distribute the electrical energy in that particular region or area
सो इसके लिए हम आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं. Thank you for watching me and listening me. Inshallah, we will be coming soon with the understanding based questions. Allah Hafiz.